A very warm welcome to the class. I really hope that you guys are doing well. So, very warm welcome to the third lecture. This is our third 25 question installment. ठीक है, तो आज के हिसाब से हमारा 75 questions जो है यूनिट 1 से हो जाएगा. So, चलिए स्टार्ट करते हैं. चलो. Okay, so the first question is, which of the following statement is correct about the Ravatak inscription? Clarifying the relationship between Kanishk and Cadphis's king, supplying new information about the last three Mauryan kings, describing an early form of Vishnu, describing the coastal trade in early Tamil history. Okay, so what we're going to see here is that what is this inscription about, और इस inscription से हमें क्या-क्या information जो है वो मिलती है, so that we are able to answer the question. All right. So first of all, this inscription was discovered in 1993 in Surkh Kotal of Afghanistan. Fine. So we're talking about the Ravatak inscription. ठीक है. तो इसको डिस्कवर कहाँ पे किया गया था guys? Discovered in where was it discovered? This is in Afghanistan and the place was Surkh Kotal. Surkh Kotal, Afghanistan. ठीक है. अब ये तो हो गया डिस्कवरी. अब इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, what all do we get to know from here? चलिए हम वो देखते हैं. ठीक है. First of all, it tells us that how Kanishk is related to, Cadphises. Fine. So, Kanishk's relation to Cadphises. Okay. And to Vima Cadphises as well. मतलब ये actually basically पूरा lineage जो है ना वो बताता है that how Kanishk is related to Cadphises and how Cadphises is related to Vima Cadphises. ठीक है, fine. Then it also tells us that how Kanishk has obtained kingship. ठीक है. So how he basically becomes the king, how he becomes the ruler. Fine. So how he obtained kingship, fine. It also tells us that how he stopped using Greek as a language and started using Aryan languages, fine. So what did he do? He stopped and started using Aryan as a language. ठीक है, तो उसने क्या शुरू कर दी थी? Aryan languages का जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था. And how he expanded the Kushan Empire towards northern India. ठीक है. ओके. सो अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा गाइस? सो ऑप्शन ए हियर इज करेक्ट, फाइन, बिकॉज इट टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन कनिष्क एंड द कैडफिसिस किंग्स. ओके, सो ए आपका जो ऑप्शन है वो सही है. ठीक है. Which of the following are famous commentators on मनुस्मृति? सो इनमें से कौन है जो फेमस कॉमेंटेटर्स है मनुस्मृति के ऊपर? फाइन. सो हु डू वी हैव ओवर हियर? सो वी हैव अपारर्का, देन वी हैव कुल्लका, देन वी हैव मेधातिथि, देन वी हैव विजनेश्वरा. फाइन. सो अब आपको इसमें ना ऑप्शंस जो हैं वो चूज करने हैं. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हाउ डू वी सॉल्व दिस. तो पहले हम देखेंगे कि कौन जो है वो कौन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ ईच ऑफ देम. ठीक है, फाइन. सो सबसे पहले जो है अपारर्का, इनको अपार आदित्य भी कहा जाता है. फाइन. एंड ही वाज व्हाट? ही वाज अ
Silhara ruler and he was a famous commentator on Yagnvalkya Smriti. ठीक है, तो ये कौन है? He is a, okay, also known as what? Also known as Apar Aditya, and he was a commentator so option A जो है अपार का, he is also known as what? He is also known as अपार आदित्य. ठीक है, फाइन. इनको क्या कहा जाता है? इनको अपार आदित्य जो है वो भी कहा जाता है. एंड ही वाज फ्रॉम द सिलहारा डायनेस्टी एंड ही वाज अ कमेंटेटर ऑन यज्ञवल्क्य स्मृति. ठीक है, okay. Then we have which options? Then we have option. Then we have option B and then option C. That is Kulaka, and then we have Medhatithi. So Medhatithi and Kulaka are actually commentators on Manusmriti. So yes, B and C are your correct options, fine. लेकिन हमें D भी देख लेना चाहिए कि D क्या है, because A तो देखो नहीं है, ये सिर्फ यज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर comment कर रहे हैं. ठीक है, fine. So let us take a look at the D option, that is your Vigneshwara, fine. So he was what? He was a jurist basically, and he has written treatises which deals with inheritance. ठीक है, तो विघ्नेश्वरा क्या है guys? He is a jurist, all right, and written a treatise which deals with इनहेरिटेंस. है ना, ये किसके बारे में बात करते हैं? इनहेरिटेंस के बारे में, कि इनहेरिटेंस जो है वो कैसी होनी चाहिए, एज इन हाउ द प्रॉपर्टी हैज टू बी ट्रांसफर्ड, राइट? सो व्हिच वन डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर? सो बी एंड सी जो है आपका करेक्ट आंसर. बी एंड सी ऑप्शन में कहां है? इट इज इन सी. सो सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. You have to match the list 1 with list 2. So these are the names of the Vedic river and these are the names of the current river. Fine. Now this is according to the Rig Ved, guys. ठीक है, Rig Ved के according, and this is also given in Upinder Singh. ठीक है, ये आपकी उपिंदर सिंह में भी given है. Fine. So चलिए हम match कर लेते हैं. So Askini is basically Chenab. So Chenab कहाँ है? This is in 2. ठीक है, fine. Then what do we have? Then we have पारुशिनी. ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? रवि. दिस इज रिवर रवि, ऑल्सो नोन एज इरावती भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 3. फाइन. देन व्हाट डू वी हैव? देन वी हैव सुतुद्री. सुतुद्री इज मैच विथ सतलज. ओके, सो सुतुद्री हो जाएगा 4. फाइन. And then what we are left with is Vipas. Vipas and Beas, you can see, are very similar to each other. So Vipas is matched with Beas. ठीक है, सो ए का 2 कहां पे है गाइज? ए का 2 ये रहा. देन बी का 3. सो बी का 3 इज हियर. सी का 4 एंड डी का 1. सो योर करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद. फाइन. ऋग्वेद में ये मेंशन है. दिस इज ऑल्सो गिवन इन उपिंदर सिंह वेरी डायरेक्टली. ओके, नाउ व्हिच पैलियोलिथिक साइट हैज yielded the evidence of a set of animal footprints along with Australian tools. ठीक है, तो आपको बताना है कि Australian tools के साथ हमें ये एविडेंस जो है वो कहां मिले हैं. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट हैव ये जो है वो किसके लिए नोन है. सो गाइस, आप सब जानते हैं दैट भीमबेटका इज नोन फॉर इट्स पेंटिंग्स. ठीक है, फाइन. व्हाट एल्स हैज बीन फाउंड? सो हुंगसी जो है वो हम क्योंकि मेसोलिथिक की बात करें, सो व्हाट हैज बीन फाउंड इन द हुंगसी एरिया. फाइन. सो वी हैव फाउंड टूल्स एंड इट इज अ हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. ओके, सो यहां से हमें क्या मिला है? टूल्स प्लस इट इज अ हैबिटेशन कम
फैक्ट्री साइट है ये, ठीक है, फाइन. देन द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज पलेरू, फाइन. सो यहाँ पे भी हमें क्या मिले हैं गाइज, यहाँ पे भी हमें वी फाउंड टूल्स एंड इट इज द डीपेस्ट फेज ऑफ segmentary sequence. Okay, so what have you found here? Tools plus deepest phase of segmentary sequence. All right, तो गाइज अब देखिए ना यहाँ ना भीमबेटका में हमें एनिमल फुटप्रिंट्स मिले हैं, ना हुंगसी में, ना पलेरू में. सो व्हाट इज द ऑप्शन ओवर हियर? सो करेक्ट आंसर इज अतिरम पक्कम, फाइन. सो दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर, ठीक है. ऑलराइट, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हैज बीन फाउंड एट व्हिच नियोलिथिक साइट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है. अब गाइज यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन है, आई एम श्योर आपको भी हो रही होगी, कि ये जितनी भी साइट्स हैं दे एक्चुअली इन पाकिस्तान. Some of them are in Afghanistan, some of them are in Pakistan. But the question here is of what? Question here is of Indian subcontinent. So don't worry. Question क्योंकि Indian subcontinent का है तो confuse हम नहीं होंगे. This is basically just trying to tell you कि yes, at some point of time, they would have been in the Indian subcontinent, isn't it? So what all has been found? Okay. So चलिए हम देखते हैं कि कुली गुल मोहम्मद में क्या मिला है. So again, this is in Pakistan. This is known for nomadic pastoralism, microliths and pottery. ठीक है, fine. Then what do we have? Then we have Coat DG, fine. Coat DG also is in Pakistan, guys, and it has found pottery of what? Pottery of Harappan period, है ना. तो यहाँ पे ये भी अब पाकिस्तान में ही, और यहाँ पे हमें क्या मिला है? We have found pottery of Harappan period, fine. इसके बाद क्या है? Next we have is मेही, fine. मेही इज इन सदर्न बलूचिस्तान, गाइज, ये भी पाकिस्तान में ही है, ठीक है. और यहां से हमें क्या मिली है? We have found cremation cemetery, we have found grave goods. Okay, so cremation cemetery is interesting कि यहाँ पे लोगों को क्रिमेट करके, जला करके जो है वो दफनाया जा रहा है, ठीक है. बस हमें cemetery मिली है ऐसी जो उसमें क्रिमेशन हो रहा है, fine. And then we have found grave goods. तो अब देखो गाइस कि कहीं पे भी जो पूछा गया है वो मेंशन नहीं है, फाइन. व्हाट इज लेफ्ट इज योर मेहरगढ़, ओके. सो मेहरगढ़ इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. वी हैव द एविडेंस ऑफ फर्स्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट ऑफ साउथ एशिया एंड एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग, ठीक है. फर्स्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट, ठीक है. यहां पे क्या मिल रहा है आपको? फर्स्ट agricultural settlement, evidence of first agricultural settlement, plus what else has been found? There is evidence of animal husbandry and farming, okay. Okay. सो गाइज अब आप सारे ऑप्शंस देखो. यहाँ पे हो गया पॉटरी, यहाँ पे हो गया नोमैडिक पैस्टोरलिज्म, माइक्रोलिथ्स एंड देन पॉटरी, ठीक है. फिर यहाँ पे हो गया क्रिमेशन सेमेट्री, ग्रेव गुड्स, फर्स्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट, एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग, ठीक है. तो फिर यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ऑप्शन हमारा सही क्या है? क्वेश्चन क्या था? एविडेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फाइन. सो वेयर हैज दिस बीन फाउंड? फार्मिंग का एविडेंस हमें कहाँ पे मिला है? मेहरगढ़ में. So this is going to be your correct answer. ठीक है, चलिए moving ahead. Now, Megasthenes' original records about India is lost. Some of his memories are preserved in the accounts of which of the following? Arrian, Diodorus, Heliodorus or Herodotus. ठीक है, तो ये कहाँ पे saved है? Fine. Now this is all according to the Greek sources, guys. Okay. ये पूरा का पूरा जो है वो ग्रीक सोर्सेस के अकॉर्डिंग है,
Fine. So this is a very factual question. We don't have a lot to explain over here, but we can just say that according to the Greek sources and according to the inscriptions and according to whatever has been, जो भी हमारे inscriptions हैं, जो भी हमारे text हैं, उसके हिसाब से D here is the correct answer, which means Arrian and Diodorus. They are the ones who have mentioned what Megasthenes has mentioned in his records. ठीक है, क्योंकि Megasthenes की जो original record है regarding India, that was lost, but some of his memories are preserved with that of Arrian and Diodorus. ठीक है. So guys, देखिए कुछ ऐसे questions होते हैं जहां हमें बहुत discussion करने की जरूरत नहीं होती है. Fine. So जब आप when you coming to these questions, प्लीज रिमेंबर, जैसे हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था ये वाला, द अर्लीस्ट एविडेंस. फाइन. सो ना ये चीजें आपको याद रखनी होगी. अर्लीस्ट एविडेंस, फर्स्ट एविडेंस, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट टाइम पीरियड्स, फ्रॉम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, फ्रॉम एवरी टाइम पीरियड यू मस्ट रिमेंबर the first evidence, the earliest evidence from various locations what have been found, ताकि आप इन चीजों को आंसर कर सको. ठीक है. Also guys, when you are doing about the rulers, है ना, तो rulers के बारे में भी you have to remember the chronological order, you have to remember the titles which they have taken, you have to remember who their contemporaries were. Fine. ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस जो है ना उनको इजीली आंसर कर सकोगे. ठीक है. चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे. सो दिस इज अ लिस्ट विच इज गिवन. कॉफिन बरियल दिया हुआ है, सॉरी लिस्ट दिया हुआ है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बरियल्स and the site has been given. This question is actually directly from Harappan sites. All right. So you have to remember what has been found in which of these sites. जो कुछ इंटरेस्टिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज आप बरियल्स पढ़ रहे हो. फाइन. सो सी व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बरियल्स हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस. सपोज यू आर सीइंग पॉटरी. Okay, so remember the kind of pottery which has been found in different locations over here. ठीक है. चलिए, so coffin burial की अगर हम बात करें, कहाँ गया, सॉरी, पहला ऑप्शन है हमारा क्या, पहला ऑप्शन इज कॉफिन बरियल. ठीक है. So coffin burial has been found where in Harappa, and this is wrapped in a shroud and placed in a wooden coffin. ठीक है. तो इसका आंसर क्या है, हरप्पा है. एंड यहाँ पे हमें क्या मिला है, द डेड बॉडी, इट इज wrapped एक वुडन कॉफी में, जो सॉरी वुडन कॉफिन जो है उसमें रखा गया है. ठीक है. देन वी हैव एक्सटेंडेड बरियल. फाइन. एक्सटेंडेड बरियल हैज बीन फाउंड एट सनौली. Okay. Then what do we have? Then we have joint burial. This is in Lothal. Okay. All right. So guys, Lothal has this, very unique tradition, you can say, where people are buried together. Matlab 2 or more people most of the time. So 2 people would be buried together, है ना? उनको साथ में ही bury किया जाता था. Fine. Then urn burial जो है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? Urn burial is in मोहनजोदारो. ठीक है. तो चलिए इसको हम लोग आंसर कर लेते हैं क्वेश्चन को. कॉफिन बरियल जो है वो हरप्पा हो जाएगा, यानी कि 1. ठीक है. एक्सटेंडेड बरियल जो है वो कहाँ पे है, सनौली हो जाएगा, दैट मीन्स 4. देन जॉइंट बरियल इज इन लोथल, ऑलराइट, दैट मीन्स 2. एंड देन अर्न बरियल इज वेयर गाइस, अर्न बरियल इज मोहनजोदारो,
It means 3. ठीक है. So 1, 4, 3, sorry, 2 and 3. So your correct answer over here is C. ठीक है. चलो, next question. All right, so now you have to match the list with the authors and whatever they have composed. Fine. तो चलिए हम देखते हैं कि ये किसके बारे में है. Okay. So the first one that we have over here is, पहला ऑप्शन क्या है गाइस? पहला ऑप्शन है काव्यदर्शा. ठीक है. So काव्यदर्शा जो है वो किसने कंपोज की? दिस वाज डन बाय दादिन, राइट? एंड इट इज अ संस्कृत बुक ऑन पोएटिक्स. ठीक है. ये क्या है? दिस इज अ संस्कृत बुक ऑन पोएटिक्स. फाइन. द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज अष्टाध्यायी, which was composed by Panini. It is a treatise on grammar. ठीक है. दूसरा ऑप्शन क्या है? अष्टाध्यायी है. Panini, and it is a treatise on ग्रामर. फाइन. ठीक है. तीसरा ऑप्शन क्या है गाइस? तीसरा ऑप्शन है महाभाष्य. सो महाभाष्य was composed by whom? So महाभाष्य was composed by पतंजलि. ठीक है. So this is the commentary on selected rules of Sanskrit grammar. ठीक है. महाभाष्य This is the commentary on selected rules of what? It is the commentary on selected rules of Sanskrit grammar. ठीक है. उसके बाद कौन सा है? उसके बाद we have तंत्र लोक. ठीक है. So तंत्र लोक was composed by Abhinav Gupta. It is a treatise. It is basically a commentary, you can say, or a light on the tantras. ठीक है. चलो इसको मैच करते हैं. So काव्य दर्शन हो गए कौन? दादिन. ठीक है. So दादिन is 4. Then अष्टाध्यायी is पाणिनि. ठीक है. So पाणिनि कहाँ पे है? 3. Okay. Then what do we have? Mahabhashya is Patanjali. So महाभाष्य कहाँ है? पतंजलि. तो ये हो गया आपका 2. ठीक है. Then तंत्र लोक is 1, अभिनव गुप्ता. So D का 1 जो है वो एक जगह पे है. चलो देखते हैं. So काव्यदर्श A का 4 is here. Fine. Then B का 3 is over here. Okay. C का 2. Alright. So B here is your correct answer. है ना. बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑल राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स? ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स हैव एक्सपोज्ड burials with skeletons of very tall height? ठीक है. So your options are Adamgarh, fine. Then you have Bhimbetka, then you have Mahadaha, and then you have Sarai Nahar Rai. ठीक है. So guys, what do you think is going to be the answer? तो एक हम पीछे भी जा सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा. So आप देखोगे कि you have some of the options, fine. So यहाँ पे क्या होगा? Which Mesolithic sites have been exposed with skeletons of very tall height? तो कहाँ पे मिला है? Fine. And which site are they talking about? They're talking about the Mesolithic sites. Fine.
सो योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? यहां पे सबसे पहले तो देखो गाइज, आदमगढ़ आएगा, ठीक है, फाइन, बिकॉज दिस इज वेयर यू हैव फाउंड स्केलेटन्स ऑफ वेरी गुड हाइट, मतलब अच्छे खासे हाइट वाले जो स्केलेटन्स हैं वो हमें मिले हैं, ठीक है. Oh no, sorry, I made a mistake. I'm sorry guys, I'm sorry. So see, first of all, let us see what has been found in आदमगढ़. जैसे हमने बाकी options देखे थे, वैसे हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है. So what have they found here? They found Stone Age artifacts, Lower Paleolithic and Mesolithic implements, ठीक है. So Stone Age artifacts plus lower Paleolithic, ओके, और क्या मिला है? प्लस लोअर पैलियोलिथिक इन मेसोलिथिक इंप्लीमेंट्स. और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां से मिली है, दैट इज एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. फाइन, ये हम याद रखेंगे, ठीक है. All right. The next option that we have is Bhim-Bhetka. Now you all know that Bhim-Bhetka is actually known for what? Bhim-Bhetka is known for your paintings. ठीक है. लेकिन यहां से we have found evidence of burials with very tall height. ठीक है. So हमें यहां पे मिले हैं क्या? We have found skeletons, ठीक है, which have very tall height. Okay. Then what do we have? Then we have Mahadaha as well. So Mahadaha से भी हमें same चीज मिली है. We have found skeletons of very tall height. ठीक है. So all right, fine. तो यहां से भी हमें एविडेंस मिला है. सो यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है गाइस वो आंसर हो जाता है. दैट इज व्हाट वी हैव फाउंड, व्हाट 2 and 3. सो सी इज योर आंसर ओवर हियर, ठीक है. सो 2 and 3 का जो कॉम्बो है वो यहीं पे है, अदरवाइज 2 and 3 और कहीं पे भी नहीं है. सो दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर. फाइन. सो 2 and 3 बिकम्स, दैट इज सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर. सो यहां पे ना आपको बेसिकली याद रखना है that what has been found in which of the places, ठीक है, कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज मिली है हमें, ताकि हम उसी हिसाब से यहां पे अंदाजे लगा सके और उसी हिसाब से क्वेश्चन जो है वो आंसर कर सके. ठीक है. ऑलराइट, जस्ट गिव मी 1 minute. ओके. ना सिंस हम सारे ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम सराय नाहराय जो है वो भी डिस्कस कर ले. दिस इज द मेसोलिथिक साइट और इससे क्या क्या चीजें हमें मिली हैं. सो वी हैव फाउंड स्टोन टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड बीड्स. ठीक है. सो वी हैव फाउंड व्हाट? स्टोन टूल्स, ornaments, beads which are made of shells as well. ठीक है. तो ये चीजें जो है हमें यहां से मिली है. सो बाय टेकिंग अ लुक एट दिस, आवर फर्स्ट आंसर जो हमने आंसर किया था 2 और 3, दैट बिकम्स करेक्ट. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कॉमेंटेटर ऑन ऋग्वेद? ठीक है. सो योर ऑप्शंस आर माधव भट्ट, सायना, then you have स्कंद स्वामी, then you have वेकांत माधव. ठीक है. तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो हैं वो ओल्डेस्ट कॉमेंटेटर हैं ऑफ ऋग्वेद. फाइन. सो वी जस्ट गोइंग टू टेक अ लुक एट ऑल द ऑप्शंस ओवर हियर. फाइन. सो माधव भट्ट जो हैं, ही इज नोन फॉर हिज कॉमेंट्री ऑन वेदास. ठीक है. सो और इनका ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे. So what is Madhav Bhatt known for? He is known for his commentary on Vedas.
और इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो कौन सा है? दैट इज जैमिनीय नयनमाला विस्तार। ठीक है, सो माधव भट्ट, और सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्क इन्होंने प्रोड्यूस किया है वो कौन सा है? इट इज जैमिनिया नयनमाला विस्तार। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। फाइन, इसके बाद जो हमारे ऑप्शन है, एक सेकेंड मैं अपना पीडीएफ खोल लूं क्वेश्चंस वाला। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज ऑफ साइना। ठीक है, सो साइना कौन है? सो ही इज अ संस्कृत लैंग्वेज राइटर एंड अ कमेंटेटर। ठीक है, सो साइना संस्कृत language writer plus commentator, and he is commented on all 4 Vedas. तो साइना जो है वो तो हमारे ऑप्शन में नहीं हो सकते, क्योंकि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऋग्वेद। ठीक है, देन हु डू वी हैव? देन वी हैव स्कंद स्वामी। ठीक है, सो next what do we have is now he is the oldest commentator, guys. ठीक है, and he has made his commentaries on what? He has made his commentaries on various aspects. ठीक है, he has made his commentaries on rishis, on devatas, and then he has also made his commentaries on chand. ठीक है, कॉमेंट्री किस किस पे की है? ऑन ऋषि, वेद, छंद, और अगर हम इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक इन्होंने लिखी है वो क्या है? दैट इज ऋग्वेद संहिता भाष्य। फाइन, सो बुक इज ऋग्वेद संहिता भाष्य। ठीक है, दिस इज हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। सो दो वी हैव गॉटन अ आंसर ओवर हियर, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी डिस्कस कर ले। ठीक है, ताकि हमें पता रहे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज वैकुंठ महादेव। फाइन, सो माधव है, सॉरी महादेव नहीं है, वैकुंठ माधव। ऑलराइट, so what was he known for? All right, so he is known for his Rigved Bhashyam. All right, then he is also known for Ragarth Dipika. ठीक है, so he is known for what? Rigved Bhashyam दिस इज व्हाट? दिस इज अ वेरी ब्रीफ कॉमेंट्री। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉमेंट्री है किसके ऊपर? ऋग्वेद के ऊपर। ओके, सो ब्रीफ कॉमेंट्री ऑन ऋग्वेद। ऑलराइट, सो गाइस हमारा आंसर कौन हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, विच इज स्कंद स्वामी, जो कि ओल्डेस्ट कॉमेंटेटर है किस पे? ऋग्वेद पे। ठीक है, all right, next question, which of the following tribes are mentioned in the Rigved? कौन से tribes हैं जो कि mentioned है ऋग्वेद में? So tribe, or they're basically talking about jana. ठीक है, so jana is what? Jana is basically a community or a tribe who share common ancestry. Fine, so we have a number of them, काफी सारे हैं। all together there are 30 tribes which have been described, लेकिन जो important ones हैं वो कौन कौन से हैं guys? So you have Anu, Dhriyu, fine, so
हाँ, जो इंपॉर्टेंट वंस है उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? यू हैव अनु, ध्रुयु, देन व्हाट एल्स? देन यू हैव पुरु, तुर्वासा, यदु, कुछ 30 है लिस्ट में, ठीक है, लेकिन यहां पे हम क्या देखेंगे कि कौन से ट्राइब्स हैं जो मेंशन्ड है ऋग्वेद में. फाइन. सो विच वन डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द आंसर? सो देखिए, यदु तो जो है वो आपका होगा ही होगा. फाइन. ऑलराइट. सो यदु इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर. पुरु इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर. फाइन. Then we also have mention of 𝐃𝐫 and 𝐷𝐷𝐷𝐿 as well. Okay, there's a list of 30, so you have to remember all 30 of the tribes. So C and D is also correct. So your correct answer over here is D. ठीक है, तो सिर्फ important ones नहीं याद रखिएगा. Remember the entire 30 because as you can see, question जो है वो important से नहीं पूछा गया है. Question has been asked from what? Question has been asked from all the tribes, क्योंकि 𝐃𝐫 and 𝐷𝐷𝐿 were not so important that they had to be mentioned, but they have been mentioned, which means yes, they are important. So you have to remember at least जो battle था ना 10 kings का, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो battle था 10 kings का वो किसके बीच में हुआ था. What were the confederacies over here? ठीक है, चलिए next question. So which of the following sanskars are prenatal? Prenatal का मतलब क्या होता है? Something which you do before the baby is born. Fine. So what is गर्भधान? ठीक है. So गर्भधान is basically an intention of a couple that they are ready to conceive. ठीक है. So गर्भधान क्या है? Intention to conceive. कि वो अब क्या करना चाहते हैं? That they want to have children now. ठीक है, fine. Then what is the next one? Then we have पुंसावना. ठीक है, पुंसावना क्या है? This is a samskar which is performed when the fetus begins to grow. All right. उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? देन वी हैव सिमंतो नायना. ठीक है, फाइन. दिस इज द सेरेमनी विच इज परफॉर्म्ड इन द थर्ड ट्राइमेस्टर. Okay. Then what do we have? Then we have Saha Dharm Charani Sam Yoga. ठीक है. What is this ceremony? This is basically a ceremony which is performed after the birth of the child. This is to welcome the child into the world. ठीक है. Ceremony to welcome the child ऑलराइट. तो प्रीनेटल जो है वो इसमें से कौन से हो जाएंगे गाइस? सो प्रीनेटल ऑब्वियसली हैज टू बी ए, बी एंड सी, बिकॉज जो थर्ड वन है वो पोस्ट नेटल है. फाइन. सो योर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The archaeological evidence that suggests that Sakyas had built a stoop over the remains, bodily remains of Gautam Buddha at. ठीक है. So again guys, this is a very factual question that you have to remember कि साक्यास जो हैं उन्होंने कहाँ पे स्तूपा बनाया था over the remains of Gautam Buddha. Fine. So which one do you think is the correct answer? So now remember, whenever you are doing regarding Buddha के बारे में जब भी आप कर रहे हो, especially when you're doing the stupas, you have to remember where the bodily remains were distributed and where the stupas have been constructed. The correct answer here is Piprahva. ठीक है. This is where the Sakyas have constructed the
अस्तूपा. साक्यास जो है वो वही क्लैन है. बुद्धा बिलोंग टू दिस क्लैन. हमने कल ही क्वेश्चन किया था अबाउट द डिविजन ऑफ बुद्धा's remains, isn't it? So this is the correct answer. See, there are certain questions which are very factual. This is something you'll have to remember. So it's not necessary कि हर question में जो है हम discussion कर सके, हर question का कोई explanation होना चाहिए, fine. But yes, wherever it is necessary, wherever you have a concept, I will definitely explain. Okay, next question. Assertion. The area between Sindhu and Hindu Kush can be regarded culturally as a part of India during most of the Hindu period. Okay, this is your assertion. The reference of rivers 𝐃𝐫, 𝐾𝐫𝐢, 𝐺𝐺𝐼 in the Rig Veda leaves no doubt that the Indo-Aryans were intimately associated with Afghanistan. Okay, so guys देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो एरिया है बिटवीन सिंधु एंड हिंदू कुश, ठीक है, इट कैन बी रिगार्डेड एज व्हाट? इट कैन बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, फाइन, ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द हिंदू पीरियड. ठीक है, ऑलराइट. सो दिस इज अ ट्रू असर्शन. दिस इज ट्रू कि हाँ सही बात है, हम इसको हिंदू कुश को इंडिया का पार्ट मान सकते हैं, फाइन. सो दिस इज ट्रू, फाइन. The references to rivers 𝐾𝐵, 𝐾𝐫𝐢 and 𝐺𝐺𝐼, okay, ये रिवर्स कहाँ पे है गाइस? ये रिवर्स अफगानिस्तान में है, फाइन. ये रिवर्स कहाँ पे है? रिवर्स अफगानिस्तान में है, ऑलराइट. एंड दिस शोज दैट द आर्यंस वर एसोसिएटेड विद अफगानिस्तान, राइट. तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है कि हाँ आर्यंस जो है वो डेफिनेटली अफगानिस्तान से एसोसिएटेड हैं. ओके, सो विच वन डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर? सो सी गाइस, the area between Sindhu and Hindu Kush, fine, which is your area of Afghanistan, जो area है उसको हम culturally हिंदुस्तान का part इसलिए मानते हैं. So the area between Sindhu and Hindu Kush, which was the area of Afghanistan that we are talking about, it is considered culturally as a part of India during the whole of Hindu period because we have references to rivers of 𝐾𝐵, 𝐾𝐲 and 𝐺𝐺𝐼 in Rig Veda, which leaves no doubt that Indo-Aryans were intimately associated with Afghanistan. ठीक है, तो हम ये किस बेसिस पे कंक्लूड कर रहे हैं that Indo-Aryans were very intimately located to Afghanistan because we have references. Sorry. How do we conclude or how do we come to the conclusion that the area between Hindu Kush and that of Sindhu was actually a part of the Indian subcontinent? हम ये कैसे conclude कर रहे हैं? ठीक है, so we are concluding this on the basis that Rig Veda has mentioned the rivers of Afghanistan. तो अगर ऋग वेद मेंशन करिए that means the area between Hindu Kush and Sindhu, which is your Afghanistan area, is definitely a part of India. ठीक है, so correct answer is going to be A. Alright, so now you have to arrange the following inscriptions in chronological order. बेहिस्तूर inscription of Darius, ठीक है. So चलिए मैं आपको इसका जो टाइम पीरियड है वो बताती हूँ कि बेहिस्तूर. अब ये कौन है? Who are these people? Darius, Boghaz, then you have Darius again. So these are people, these are Indo-Greeks guys, ठीक है. Greco-Roman भी बोल सकते हो उसको, ठीक है. So these are the kings and they have left inscriptions for us. And what is the time period for them? So Darius का जो पहला inscription है, that is the Behistun, that is from 520 to 518. Okay. Then you have the Boghaz Koi inscription. This is 1400 BCE. Then you have the Naqshi Rustam inscription of Darius. This is 490 BCE. All right. And then you have the Persepolis inscription of Darius. This is 510 BCE. So now you have to arrange them chronologically. Chronologically arrange करोगे तो क्या होगा? Which one do you think is going to be your correct answer over here? Fine. So all right.
So सबसे पहले कौन सा आ जाएगा गाइस? सबसे पहले you will have B, fine. Then you will have A, okay. Then you will have D and then you will have C. So B, A, D, C. So B is going to be your correct answer. ठीक है? All right. Now, which of the following pairs is wrongly matched? Panchal is matched with Mathura. ठीक है? Matsya is matched with Bairat. Kosal is matched with Shravasti. Magad is matched with Griviraj. ठीक है? Now a lot of you will think यार मगध गलत है, लेकिन नहीं, मगध गलत बिल्कुल नहीं है. Magad is absolutely correct. So initially the capital of Magad was Griviraj, or you can say Rajgira also, or Rajgriha, but later it changed to Patliputra. That was during the time of whom? That was during the time of Mauryas. Fine. जो इसमें सही से मैच नहीं है वो है आपका पांचाल. Why? Because Panchal actually has two capitals, north and south. Fine. So north में it has what? North में it has Kampilya. Fine. And south में it has Achichatra. ठीक है? These are the two capitals which are there. Fine. So कौन सा सही से मैच नहीं है? Okay, sorry guys, एक confusion हो गई, ये उल्टा हो गया. This is south and this is north. Fine. So this is these are the title, these are the capitals which are there. So A जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा. This is the one which is not correctly matched because Panchal has two capitals. Okay. Now you have to match list 1 with list 2. ठीक है? So यहाँ पे क्या दिया हुआ है guys? यहाँ पे दिया गया है योग, मीमांस, शंख्य, then you have वैशेषिका. ठीक है? So अब आप सोचो कि किसने क्या शुरू किया होगा. This is a very easy question. बहुत आसान question है ये. These are on the 6 philosophies of Hinduism. Fine. Okay. What is this on? This is on your 6 philosophies of Hinduism. So think which one do you think is the answer over here. So इसमें ना एक अगर आप आंसर कर लोगे then I think you'll be able to answer all of them. So योग I am sure कि आप सब जानते हैं कि किसने किया है. योग is all about Patanjali. ठीक है? So योग is Patanjali. So let us mark it. So ये हो जाएगा आपका A का 2. ठीक है? All right. Then what do we have? Then the Samakhya school के बारे में हम देखते हैं. Samakhya was done by whom? Samakhya was done by Kapil. Okay. So this is 1. All right. ठीक है? उसके बाद कौन बचा? उसके बाद we have Mimans and then we have what? Then we have the वैशेषिका school. ठीक है? So वैशेषिका school जो है वो उसके फाउंडर कौन है? So वैशेषिका के जो फाउंडर है वो है कन्नड़ा. ठीक है? So this is 4. All right. So Mimans के कौन बच गए? Mimans is 3 over here. All right. So योग यानी कि A का 2 जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है. B का 3 is here. C का 1 and D का 4. So your correct answer over here is B. ठीक है? All right. These are the 6 schools of philosophy, guys. Fine. So योग अगर मैं concept की बात करूँ थोड़ा सा, let's talk about it a little bit. So योग is one of the 6 philosophies that was being given by Hinduism, or you can say 6 schools of philosophy. So yoga was given by Patanjali and he said that the way to salvation is what? He said that the way to salvation or the core philosophy to salvation is meditation, and how you apply meditation to your bodily remains, as in how you apply meditation to your physical activities. ठीक है? और उसके बाद कौन है? उसके बाद हाँ, ठीक है? So that is your योग स्कूल, जो आपका मेन आपका कोर फिलॉसफी है उसका वो है. उसके बाद आते हैं हमारे समख्या. समख्या की जो कोर फिलॉसफी है वो क्या है? So they believe that there are 2 creations, all right, or that everything in this world is existing because of 2 things, and that is पुरुष and प्रकृति. ठीक है? कि इस दुनिया में कोई भी चीजें जो हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, that is because of what? Sorry. That is because of पुरुष and प्रकृति.
तो ये क्या है? दिस इज देयर फिलोसफी. फाइन. दिस इज द फिलोसफी ऑफ समाख्या, that whatever is there, जैसे this is like yin and yang वाला जो पोर्शन होता है ना, ये सेम चीज बात कर रहे हैं. So it postulates that everything in this world exists because of what? It exists because of Purush and Prakriti. Purush is what? Purush is your mind, you can say, soul, you can say, and Prakriti is the creative energy, or you can call them the male and female energy as well. Okay? तो जैसे मैंने आपको योग जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. What is न्याय? What is the न्याय school of thought? Nyaya school of thought believes in logical thinking. They believe in the teachings of logical thinking, that everything should have a logic behind, and it is this logical thinking according to them that is going to get you to salvation. So analytical thinking, emotional thinking nahi hona hai, analytical thinking hona hai. Fine. Then you have the Vaisheshika. So Vaisheshika is actually very scientific in nature. You know what they say, that everything in this world is made out of what? Is made out of atoms. Fine. Atoms have neutrons and protons, guys. ठीक है? तो हम सब कहीं ना कहीं atoms से ही बने हुए हैं. That's absolutely true, right? So we are made of atoms, and everything has, atoms have neutrons and protons. ठीक है? They also have what? They also have a nucleus at the center. It is the nucleus which powers them. So similarly, we are all made of atoms, and it is the Brahman, the ultimate reality, which is in the center of these atoms, which actually power us. Okay? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वैशेषिका स्कूल का जो थॉट प्रोसेस है, आई वुड से. ठीक है? Then what do we have? All right. Then we have मीमांस. फाइन. इसमें पूर्व मीमांस उत्तर मीमांस दोनों आता है, लेकिन मेन फिलॉसफी क्या है? मेन फिलॉसफी इज द एनालिसिस of interpretation and application and use of the text of Samhita and Brahman portions of Ved. So they're not saying कि बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ लेना है और आपको इसको इस्तेमाल कर लेना है. नहीं. They are asking. Okay. They're asking for what? They are asking for, sorry. They're asking for what? They're not asking for just बस पढ़ के उसको हमें अप्लाई करना है लाइफ में. No. They're asking for analysis of interpretation. So you have to analyze it, you have to interpret it, and whatever your interpretation is, you have to apply what? You have to apply the Samhita and the Brahman portions of Veda, but only after you have analyzed it. ठीक है? फिर आता है हमारा वेदांत स्कूल ऑफ थॉट. ठीक है? तो वेदांत स्कूल ऑफ थॉट जो है, इनका बेसिक पर्पस यही है, दे बिलीव्ड इन जो द्वैत फिलोसफी होती है ना, देयर इज एन आत्मन एंड अ ब्रह्मन. फाइन. So Atman is us, that is the individual soul, and we are all surrounded with Maya, which is your illusion. ठीक है? और फाइनली हम जब इस illusion से आजाद होंगे, then we are going to become one with what? We are going to become one with Brahman, that is your Brahmand. ठीक है? Brahman here does not mean Brahman. ठीक है? वेद वर्ण वाला ब्राह्मण नहीं. Brahman here means the universe, the ultimate reality. ठीक है? So we are going to become one. We are going to become one with the Brahman. ठीक है? All right. Okay. Now, next what we have is, again, you have to match the list of authors with, you know, whatever they have composed. Fine. So let us see क्या है इसमें options में. तो हम पहले देखेंगे books और फिर हम देखेंगे उसके authors. So सबसे पहला book, सबसे पहले what do we have is प्रतिमा नाटक. ठीक है? So this was composed by whom? This was composed by Mahakavi Bhash. Okay? So what do we have over here? All right. So what is this book about, guys? So this is a play based on the events of Ramayana.
ऑल राइट, ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज चतुर्वर्ग चिंतामणि, ठीक है. दिस वाज चतुर्वर्ग, हाँ नेक्स्ट ऑप्शन यही है ना, 2 यही है, चतुर्वर्ग चिंतामणि, फाइन. And this was composed by Himadri and it is a book. Himadri, it is what? A book on, so किस चीज के ऊपर है ये? This is a book on what? This is a book on daily procedures, fine, regarding dharma. Okay. And what? Daily procedures of vrat. Okay. Next option कौन है हमारे पास? Next option we have is Dasa Kumar Charita. This was by Dadin. ये किसने किया था? This was done by whom? This was done by Dadin. And what is this book about? This book is a narrative of 10 young men. ठीक है? This is a romance prose actually. Young men. This is a Sanskrit romance. ओके. नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन कौन से हैं? उत्तर रामचरिता, ठीक है. एंड दिस वाज कंपोज्ड बाय whom? So उत्तर रामचरिता was composed by भावभूति. एंड व्हाट इज दिस बुक अबाउट? ये किस बारे में है ये किताब? ठीक है. दिस इज बेसिकली अ संस्कृत प्ले. ओके, संस्कृत प्ले ऑफ अराउंड 7 एक्ट्स. ठीक है. ऑलराइट, तो ये क्या हो गई गाइस? दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट योर, ये हो गए सारे ऑप्शंस. तो चलिए हम देखते हैं. सो भाष ने क्या किया है? प्रतिमा नाटक. ठीक है. सो भाष इज व्हाट? भाष इज 1 ओवर हियर. ठीक है, प्रतिमा नाटक. देन दादिन ने कौन सा कंपोज किया है? दादिन इज दशकुमार चरिता. सो दशकुमार चरिता इज 3. Then what is Himadri composed? Himadri has composed चतुर्वर्ग चिंतामणि. ठीक है, चतुर्वर्ग चिंतामणि हो गया आपका 2. ठीक है. And what has भावभूति done? He has produced the उत्तराम चरिता. ठीक है, सो ये हो जाएगा 4. ओके, सो A का 3, B का 1, C का 2, D का 4. C is the correct answer. ठीक है. All right. Okay. Harappan civilization was in close trade relations with South Turkmenistan. Harappan objects such as those or those produced under Harappan influence have been found in Kish और निपुर एक्सेट्रा. ठीक है. तो अब इसमें जो है वो आपको क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है. फाइन. सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइज दैट बोथ द स्टेटमेंट्स हियर आर ट्रू. ठीक है. फाइन. They're talking about Turkmenistan over here. So yes, Harappans did have trade relations with Turkmenistan. Okay. But the reason here is not true. Harappan objects produced under Harappan influence, जो किश और निपुर है ना, ये मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं. ठीक है. So even though, and they're not talking about what, then this is not related to Turkmenistan.
Fine. Kish or Nippur, if you remember your class 11 syllabus, you would know that Uruk, Mari, ये सब क्या है? These are cities in Mesopotamia, right? So यहाँ पे हम क्या देखेंगे, किसके बारे में हो रहा है? So the reason part is basically talking about what? Mesopotamia, and the assertion part is talking about Turkmenistan. So even though both the statements are true, they're definitely not the explanations of each other, क्योंकि दोनों अलग-अलग जगह की बात कर रहे हैं. So B becomes your correct answer. ठीक है? All right. The followers of the Ajivika sect were known by different names. तो इनमें से कौन से नाम है ना? This is a question that I want you all to answer. ठीक है? हर क्लास में आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपको आंसर करने हैं. So ये क्वेश्चन वो है जो आप आंसर करेंगे. Fine. So what are the different names that they are known by? So you have Hata Palekhana, then you have Ek Dantika, then you have Magandika, then you have Tendika. So these are the names. So you have to tell me which are the names that they are known by. Okay. All right. Which of the following works? Next question. Sorry. Which of the following works was the first to suggest payment of cash to officers as salary? Okay. So चलिए हम देखते हैं कि what are these books about. Fine. So first of all, we have to see what is Kamandika Niti Shastra about. It is on politics and statecraft. Fine. This has been written by Kamandaka. All right, he's the author. And this is about what? This is about politics and statecraft. Okay. Then what do we have? Then we have Ardhashastra. So you all know it is written by Kautilya, and it is here that you will find the first mention of cash payments. ठीक है? तो वैसे तो हमारा आंसर जो है वो यहीं पे आ चुका है. We've already answered this. But let's take a look at the other options. Manusmriti, you all know this is the laws of Manu. So this is nothing to do with polity and statecraft. This is mostly regarding how the society has to be. ठीक है? Then what do you have? Then you have Niti Vakya Amrita. ठीक है? So Niti Vakya Amrita जो है, it is written by a Jain scholar, all right, whose name is Somdev Suri. Okay? And it is on what? It is on ethics, politics and society. So it is written by whom? A Jain scholar जिनका नाम है Somdev Suri, and it is on what? Politics, ethics, society. ठीक है? So your correct answer is B. Okay? Okay. At which of the following places is the stupa built by the Shailendras located? Fine. Guys, again, this is a very, you can say, factual question है ये. ठीक है? So इसका बहुत explanation जो है वो नहीं है. So whenever you are doing about, whenever you're learning about these dynasties, remember their architectural marvels as well. Remember their architectural contributions as well. That is very important. The correct answer here is Borobudur. This is where they have built the stupa. ठीक है? Okay. Next question. Which of the following sites provides evidence for domestication of animals in Mesolithic period? ठीक है? चलो हम देखते हैं कि हमें कहाँ से मिलता है. आदमगढ़ से, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था पीछे ही, we do find evidence of domestication, है ना? यहां से हमें for sure जो है वो देखने को मिला है. ठीक है? What has been found in Bagor? We have found 5 human skeletons buried in a planned manner. Okay?
ऑलराइट, ठीक है। लोटेश्वर से हमें क्या मिला है? वी हैव फाउंड एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड प्लान्ड माइक्रोलिथिक टूल्ड ट्रेडिशन। तो वी फाउंड व्हाट? ह्यूमन एक्टिविटी गाइस, ठीक है। सो ह्यूमन एक्टिविटी में क्या आ जाएगा आपका? ऑब्वियसली यू विल हैव डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो आ सकता है, डेफिनेटली, फाइन। ऑलराइट, सो लोटेश्वर में हमें ह्यूमन एक्टिविटी का जो है वो एविडेंस मिला है, फाइन। एट द सेम टाइम वी हैव ऑल्सो फाउंड, सो ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या? ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे है एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, सो दिस ऑल्सो इज ट्रू। सो आदमगढ़ लोटेश्वर तो देखो होगा ही होगा आपका, ठीक है, फाइन। सो एंड यस, वी हैव ऑल्सो फाउंड माइक्रोलिथिक टूल्स, ओके। ओके, देन रत्नापुर जो है, रतनपुर, यहां पे हमें क्या मिले हैं? यहां पे हमें सिंपल जो है वो माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हैं, फाइन, ऑलराइट। तो अब हमें हमारा ऑप्शन देखो क्या क्या है, 1 है और 3 तो है ही है, ठीक है, फाइन। सो 1 and 3 आर where? 1 and 3 are here only, fine, it is in C only. So यहाँ पे 2 जो है वो भी added है, that means in Bagor also you have found evidence of domestication of animals. So guys, isn't it like obvious a little bit that when you have planned burials happening, then you can definitely have domestication of animals, as in they must have reached that level at least, that if they are planning burials, they're definitely having, you know, they've reached the level of domestication of animals, plus what? They've also reached the level of domestication कर रहे हैं, agriculture कर रहे हैं, planned burial कर रहे हैं, so that's definitely there, ठीक है। चलिए, next what we have is, next question is match the items. So this is the antiquity items and where have they been found, fine। तो पहले तो ना गाइस हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या चीजें, ठीक है। व्हाट इज एश माउंड, व्हाट इज अयागपत, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि व्हाट आर दीज, ओके। So the first one that we have is ash mounds. So ये क्या है? These are large man-made mounds of ash and burnt earth created by the Neolithic period. ठीक है? ओके, तो ये क्या है गाइस? एश माउंट्स क्या होते हैं? तो व्हेन मैन मेड, सो माउंट्स जैसे छोटे छोटे, जैसे माउंटेन्स जैसा हम बनाते हैं, सो दिस इज व्हाट अ माउंड इज, एंड दिस इज क्रिएटेड, मैन मेड होता है, दिस इज बीइंग क्रिएटेड बाय होम? दिस इज बीइंग क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स बाय बर्निंग व्हाट? बाय बर्निंग एश एंड अर्थ, ओके। देन यू हैव अयागपत, ठीक है। व्हाट इज दिस? इट इज अ वोटिव स्लैब एसोसिएटेड with worship, okay। now where have the ash mounds been found? so ash mounds जो है वो आपको मिलेगा उतनूर में गाइस, ठीक है। where it has been found? in उतनूर, okay। then what do we have? then we have अयागपत। so अयागपत is what? it is a votive slab associated with worshipping in Jainism। ओके,
So it is associated with what? It is associated with worship in Jainism. और ये हमें कहाँ पे मिला है? This is being found where? This is being found in Mathura. Okay. So guys, votive अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. So votive inscriptions are inscriptions which record the donations made by common people to the religious institutions. ठीक है? तो आप जैसे मेरे जैसे लोगों को डोनेशन देते हैं किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, उसको अगर रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज योर वोटिव इंस्क्रिप्शन. ठीक है? ऑलराइट, देन व्हाट डू वी हैव? देन वी हैव द 11 हेडेड गॉड. ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ 11 हेडेड लिखा है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द 11 हेडेड गॉड who is also known as what? बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है. is also known as अवलोकितेश्वरा. ठीक है? also known as alright. So 11 headed god है, statue है. This is being found at Kanheri. Alright. और मुझे लगता है कि मुझे आपको स्टोन रेलिक्स के बारे में जो है वो बताने की जरूरत है. वे हैव दीज रेलिक बॉक्सेस बीन फाउंड. फाइन. सो ये रेलिक बॉक्सेस जो हैं वो क्या होती हैं? सो दीज आर स्टोन रेलिक बॉक्सेस, बेसिकली बॉक्सेस व्हिच हैव द रेलिक्स और रिमेन्स ऑफ बुद्धा. फाइन. एंड दे हैव बीन फाउंड वेयर? दे हैव बीन फाउंड इन सांची. ठीक है? तो चलिए इसको मैच किया जाए. एश माउंट्स उतनूर. ठीक है? तो ये हो जाएगा 4. देन अयागपत इज वेयर? दिस इज इन मथुरा, सो दिस इज योर 2. देन 11 हेडेड जो गॉड है वो कहाँ है? कान्हेरी, यानी कि 1. एंड देन रेलिक बॉक्सेस इज 3. ठीक है? सो डी का 3 कहाँ पे है गाइस? ओके, सो ए का 4. फाइन. देन बी का 2, C का 1 and D का 3. So B becomes your correct answer. Alright. Now you have to arrange these grammarians in the chronological order. तो चलिए मैं आपको बताऊं कि इनका chronological order कैसे होगा. So Katyayana, he is in the 3rd century BCE. Fine. देन पाणिनि जो है वो कौन सी सेंचुरी में है? 6th और 5th सेंचुरी. फाइन. देन वामन इज इन विच टाइम पीरियड? ही इज इन 7th century CE. Alright. Then Yashka is when? Yashka is from 7th to 5th. Alright. ओके, सो अब इसको अरेंज करो. हाउ डू यू अरेंज इट? सो सबसे पहले हो जाएगा गाइस 4. ठीक है? देन यू विल हैव 2, देन यू विल हैव 1 एंड देन यू विल हैव 3. ओके, सो 4 2 1 3 इज B. ऑलराइट. सो B becomes your correct answer. Okay. All right. So with this, we have finished our discussion of another 25 questions from where? Of another 25 questions from Unit 1. ठीक है? So I really hope कि आप लोगों को जो है ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं रही हो. We have also had a discussion of the few concepts which I felt was necessary, जैसे कि हमारा जो जो हमारी philosophies हैं, right? जो हिंदू philosophies हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं. सो आई रियली होप कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, कहीं भी कोई डिफिकल्टी जो है वो नहीं रही होगी, राइट? आई रियली होप एवरीथिंग इज ओके. सो काफ़ी कुछ कर लिया हमने, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए, right? And I also told you what all you have to remember
फाइन. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि हम क्वेश्चंस के साथ साथ काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, काफी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं. So you will see that with every question, I'm not just discussing the answers. If there's a book, I'm telling you what this book is about. If there's an author, I'm telling you what this author has written. Okay? So I'm trying to give you as much extra information as possible so that you're able to solve more and more questions. Okay? Alright, so that's about it for today's lecture. We discussed the concept of Hindu philosophies. उसको एक बार जरूर से go through कीजिएगा. At least remember कि उनका जो core philosophy है वो क्या है. ठीक है, चलिए. Alright guys, so then thank you so much for joining me over here. It was an absolute pleasure to have you all. I will now see you in the next lecture. Till then, please take care. Thank you. Bye-bye.